with us, the Gen Z generation with us, which I think it's, again, another very exciting. Youth is one of the most exciting phases in one's life, filled with dreams, aspirations, hopes, some fear too. युवा पीढ़ी हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ लाती है जहाँ पे बहुत सारा जिज्ञासा भी रहता है और साथ ही साथ बहुत जागरूकता भी है. आज की पीढ़ी में बहुत सारी जागरूकता भी है. वो सिर्फ एक नहीं, एक साथ कई तरीके के एक्टिविटीज, कई सारी चीजें करने में इच्छुक रहती है और करती भी है. So this is also a very impressionable age, filled with some important life decisions that sometimes even shape our lives. So I'm very excited to have with us a panel of Gen Z, and I'll start with introducing Ms. Tanya Mittal. Tanya is a fashion blogger. She has a huge social media following, and in fact, she has also been approached by a lot of brands for brand endorsement. We will hear more from her, and we will hear more about life experiences. I will ask Rahul now to introduce the other two panel members. Thank you. Thank you, Shani. So in our other panelists, we have Harkirat Parasji, and I would like to introduce him in a way that he has been really inspirational. He has been a Cleft proud individual. At the same time, he has achieved a lot. He has been doing a business across India and overseas. He has been successful in making ties with governments, MNCs, and a lot of IT companies as well. So welcome, Harkirat ji. While I talk about Jay, I think Jay has been really inspirational. His journey has also been a part in a similar way that all the Cleft warriors has been. It is full of hospital adventures, and he has been a great singer. We have heard one of the song yesterday, and he has been inspiring a lot of other individuals as well. So welcome, Jay. Before we move to the panel questions, I can definitely say this. While we all of us, we are all born into social groups, and we have been living or leading our lives as a part of the society. So here, from all our panelists, what we would like to understand is how social contact actually affects the health, or if I say Cleft, how it has been affecting the social contact. So over to you, Ishani. Yes. So before we get into that, we have just briefly introduced you, but I'm sure all of us would love to know a bit about your life's journey. So आप अपने जीवन की journey के बारे में थोड़ा बताइए. Anything that you feel comfortable sharing. Yes, Tanya, you can start. Hello, everyone. Working, right? So my name is Tanya Mittal. I'm 24 years old, and as Ishani introduced me, I am a fashion and lifestyle blogger, and I am also working as a digital marketer in Google currently. So yes, I am a Cleft warrior. I was born with cleft lip, and I don't even remember right now that how many surgeries I had since childhood till now. And apart from surgeries, I'm also having orthodontics treatment, which is still in process. But apart from all the surgeries and treatments, I was able to successfully manage my career in corporate as well as fashion life. And yes, that's it. Lovely. Harkirat, आप थोड़ा बताइए. Hello, my parents, my daughter, and my parents, and everyone here. I am 38 and I was born in 1995. There was there was not there in India, so I am my 38 at an hospital. So I have 7 38. And any my name for my on notice and my name and therapy. And it is life saving. I think so. I start that when I was born in 1995. So I made infinite surgery in my lip
and my planet. So after that, I went to school and from nursery to class. I was like a very shy person, as I haven't done here. So you will understand if we believe after my thought I can run the area or almost a machine run the monona. You have not to be for 1 month or 2 months. Actually, actually, I'm at the most my time. I don't know another situation, but the minute I'm out of that, machine not, no machine not, hit any honey, or the more not machine. So many areas, many actually, here can any hole into many. So areas, no man, machine not only at that, or yet the yat that no shot the mechanic that. I just say, mình một hình như là thời gian mà tại sao một mình thêm thằng mà anh yêu nó ăn thằng mình phát anh mình sẽ huề hết còn mình mặt anh còn hồi mình ô anh yêu शुरू thêm mình ăn như thằng phải để gì mình còn हम तुम्हारे साथ है वही फिर mình हो वही फिर một mình chọn anh ấy हम mình ăn đó हम mình uống giấy और वहाँ उसी में जो मतलब मेरे से हम बोल रहे हैं वैसे बोल दिया तो एक्चुअली मैं उस शुरू से पता था मैंने को क्या है मतलब मैंने वो एक्चुअली उसका वो नाम नहीं पता था तो फिर एक साल तो मैं शांत रहा और फिर मैंने समझा और मैंने जो वो होता है ये लो आपको एक्चुअली वो यज्ञ करते हैं तो इसलिए मैंने वो अपने आप को एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा अपने आप को वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं हूँ इस दुनिया में मैं भी हूँ तो मैंने वो अपनी वो के लिए ही मेरे को वो जस्टिफाई करना पड़ेगा तो 9th स्टैंडर्ड में आई वाज द ओपन इन माय क्लास तो उसने काफी हेल्प की मेरे को और तो I was actually involved in my ambition. So if you have a whole English, so I was one of the students in ambition. So उसके बाद मैं अपने हायर सेकेंडरी एरिया तो वहाँ पे मेरे साथ जैसे होता था वो ही तुमसे बोलना एरिया था आपको ऐप लोगों में तो भगवान की कृपा से मेरे पास मेरे 2 फ्रेंड थे तो उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया और वही मेरी वो अनुकामना था तो मेरे फ्रेंड के साथ वो लड़ पड़ते थे तो एम्बुलेंस में मेरे ऐसे फ्रेंड थे तो वहाँ पे मैंने उस सीजन बनाया गया मैं इस एक्चुअली ऐसे मॉनिटर क्लास तो उसके बाद जब मैंने एक्चुअली अपने वो मैं एडिशन में ई है मीट इंजीनियरिंग तो आई एम एन इंजीनियर तो जब मैं ओरी में गया तो वहाँ पे मैंने सोचा अपनी जो मेरी लाइफ में हुआ वो पीछे रह जाए अपनी नई शुरुआत में नया हो रही है हर चीज नई है तो आई हैव टू स्टैंड इट आउट तो एक बहुत ही वो मशहूर डायलॉग है शाहरुख खान की फिल्म का तो उसमें उसने बोला था अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की ख्वाहिश रखते हो तो या राइट तो पूरी कायनात उसको आपके साथ निकालने के लिए शिद्दत रखती है तो एक्चुअली वो मैंने अपने दिमाग में कर लिया था तो उसके बाद एक्चुअली आई वाज जो ऐसे here of my class and I was I was the first student in my own history to become student head and I was the first मैं वो पहला student था जिसको होने वालों ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल दे दिया तो एज ए स्टूडेंट अपनी मैं एवरेज में नहीं बोलूँगा मैं अपनी पूरी क्लासेस में आता था तो मैं वो पहला स्टूडेंट था जिसने अपनी एजुकेशन के साथ साथ मैंने और सोशल मीडिया भी संभाला उनकी वेबसाइट भी संभाली तो उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो वहाँ पे
मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई जैसे वो अपनी जो थे हमारे वो एक्चुअली मन आए आसिम जी प्रॉब्लम थी है जब आप कहीं पे नौकरी में नहीं आते हो ना तो तब आपको लोग में जज करते हैं आप पेरेंट्स से आप क्या बोलते हो ऐसे बोलते हो क्या करते हो क्या नहीं करते उससे लोग आपको जज करेंगे और ये हम किसी की सोच नहीं बदल सकते उसके अलावा मैंने भी जब मैंने अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया था एज इंजीनियर तो लोग अपनी जैसे छाती का आर मारने हैं ना इंजीनियर तुम भी आना छाती में वैसे मैंने अपने अपने वो सीवी मारने थे अमृतसर की और पंजाब की कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसमें मैंने अपने रिज्यूमे नाम आते हो तो हर किसी के पास यही था सर कि आप क्या कर पाओगे आप फिर ऐसे कर पाओगे तो ऐसा बात जो ऐसे जो टर्न और वो मेरी लाइफ में पॉइंट था जहाँ मेरे को पता लगा नहीं अब नौकरी अब लोगों को मैंने सफाई नहीं देनी अब मेरे को खुद कुछ करना है तो मैंने अपने मेले शुरू किया तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर मैंने उस मेले को बनाया और आज वो मेरे पूरे इंडिया में है मेरे को मालूम है आप सब पूरे इंडिया में से आए हो आप जिस भी शहर से आए हो उस शहर का नाम बोल दीजिए मेरा एक बंदा वहाँ पे होगा तो इतना मेरे से मैंने कर लिया तो बात बोल इतना तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप को मुफ्त एक प्रॉब्लम आएगी जो आप अगर आप एक अवेरियर हो तो आपकी प्रॉब्लम आएगी हिम्मत नहीं हारनी लोगों को सफाई नहीं देने की जरूरत आप अपने आप में विश्वास रखो आप ये सोचो कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया है आपके लिए वो एक घंटा दो घंटे डॉक्टर के ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे कि अब डॉक्टर जी आए थे और हमारे बच्चे को देखे तो उन्होंने रात को डॉक्टर ने बुलाया कि तुम्हें 5 बजे घर के लिए तो सब सारे काम छोड़कर तो वो सीधा आपको वहाँ पे लेके आते थे जब मेरी सर्जरी हुई थी जब मैं काफी छोटा था तो अब एक्चुअली आई नो मेरे हर क्या हालात थे क्या था हर किसी को पता होता है तो उसके लिए जो भी मेरे फादर ने किया है वो डेफिनेटली हर किसी के फादर ने किया है तो अब ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हम पे भी है कि हम उस उम्मीद को भी आए रहें और साथ ही में जो हम अपने आप में जो वो एबिलिटी है we are different we are made different let me different you and me are one little you and me in place of anonymous or you and me in the place of millions or you and me are lesser more money it's up to you what you and want to become so thank you I think I have no matter of time थैंक यू सो मच हरकिरत आपने जो बताया ना वो आपके जो एक्सपीरियंस और आपने जो सीख बताई वो हम सभी पे लागू होती है और इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सिर्फ यंग या फिर यूथ को नहीं हम अडल्ट्स को भी एंड ओवर टू आवर यंगेस्ट जेनजी जय जय इज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ डिजाइन एंड प्लीज टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ Hi everyone, my name is Jay Gaur and मैं 20 years का हूँ और मैं डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में सो बाकी सारे क्लेफ्ट पेशेंट्स की तरह मेरी जर्नी भी सेम थी सेम वही हॉस्पिटल एडवेंचर्स हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना डॉक्टर से मिलना एंड इंजेक्शंस बहुत कुछ तो एक तो मैं क्लेफ्ट पेशेंट ऊपर से प्रॉपर इंट्रोवर्ट कि कोई सामने से आ जाए मेरे से हाय बोल दे आई डोंट इवन रिप्लाई आई विल जस्ट लुक डाउन एंड मूव अवे सो दैट वाज वेरी awkward for me also and for others also so what used to happen is कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने आप को कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ क्या मेरे मन में चल रहा है क्या मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं I never used to express not even to my parents
ओके जैसे मैं घर स्कूल से आया तो मूड मेरा ऑलमोस्ट सेम रहता था क्योंकि ना मेरा दुख अब पता चलता था ना खुशी अब बिकॉज फ्लैट फेस कुछ पता नहीं चलता था तो कोई मेरे से पूछता भी नहीं था तो अगर किसी ने स्कूल में मेरे को बुली कर दिया तो फॉर क्लेफ्ट एंड फ्लैट नोज तो मैं किसी को नहीं बताता था इट्स लाइक कि मैं अपने रूम में गया पिल्लो रखा एंड रोता था ओके सो एक दिन क्या हुआ कि मामा कॉट मी रेड हैंडेड क्राइंग सो उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ मैंने मतलब काफ़ी रिलक्टेंट था मैं बताने के लिए कि a student in the school made fun of my nose and how the way I used to talk. So she said that it happens with everyone. मैंने कहा मम्मा it doesn't happen with everyone. It's like कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा होता है मैं आपको सारी बात नहीं बताता हूँ but it happens a lot. So there was a communication gap definitely जो आज भर गया है ओके मैं खुद को एक्सप्रेस करने लगा हूँ नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा थोड़ा तो फिर उसके बाद पापा कमरे में आए पापा ने पूछा कि क्यों रो रहा है मैंने पापा दिस हैपेंड ऐसे मेरा मजाक उड़ाया स्कूल में है तो अच्छा रोता रहे मैंने है क्यों मतलब मेरे पापा बहुत सार्कास्टिक हैं वो मतलब बहुत ही ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन so he told me he came back and sat next to me he told me that अगर किसी ने मजाक उड़ा दिया तो you have to deal with it because पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है सबका उड़ाती है अगर तुम एक बात को लेकर बैठे रहोगे तो मूव ऑन कैसे करोगे तो those were words that he spoke and I still remember them and मैंने फॉलो करता हूँ अब ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया someone insult is different मजाक is different so मैं इतना you know खुद पे मतलब इतना क्या कॉन्फिडेंट हूँ मैं अब बट स्टिल मुझे दूसरों की बातें अभी भी लगती हैं दिल पे इट्स नॉट लाइक कि हार्ट ऑफ स्टोन बट इट डज फील बट इट्स लाइक कि आई नो it will happen and thoda mentally development itna hai ki I can deal with it so also jab mera rhinoplasty hua and everything happened things changed totally um, मेरा nose जो पहले दबा हुआ था it was lifted and the surgery was done by Dr. Karun and he's the sweetest doctor I have ever met okay so उसके बाद काफी changes आए it was कि मैं अपने looks पे थोड़ा कम ध्यान देने लग गया because वो थोड़ा normal हो गए अगर सामने से कोई आता तो they were not like कि जय what happened to your nose they were like normal totally normal like any other person they will talk to me and सब कुछ normal था but then slowly I realized कि ये सब मैंने पहले क्यों नहीं किया अब मैं सबसे जाके अपने आप बात करता हूँ I'm ambivert actually I don't like to put label but it is what it is so मैं extrovert भी हूँ I like to go out I like to stay in focus on myself read not read I'm not a reader so ये मतलब was quite the journey okay and now I have a lot of friends like मेरे group में around we have like 12 friends and I can talk to them one on one without any hesitation even one of my friend is here Khushi Agarwal okay so she's been my best friend okay so one thing happened with me कि friends से मुझे confidence आया बचपन से लेके 12th क्लास तक आई नेवर हैड फ्रेंड्स बिकॉज मैं किसी को अप्रोच ही नहीं करता था ओके और कोई मेरे पास आता था इट वाज लाइक कि सिंपैथी के साथ वो मेरे से डील कर रहे हैं तो दैट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी मतलब वी कैन नॉट टर्म इट एज फ्रेंडशिप ओके ये सिंपैथी है एम्पैथी ओके बट दैट वाज नाइस बट प्रॉपर फ्रेंडशिप मुझे कॉलेज में आके मिली and that changed my life entirely. Thank you.
Beautiful. Thank you so much, Joy, for sharing something so personal. And I know it was a challenge and I know it was not easy, but hats off. Uh, Moving on, Rahul, would you take up the next question? Sure. So, since all of you have shared your life journey, I can definitely say we all are inspired with the way आप सबने अपने life में कितना सब कुछ आज के time में achieve किया. You have actually made connections now. So on the on the contrary, आप देखेंगे there are so many things that you are doing right now. आपके दोस्त हैं, आपकी families में आपको इतना support मिला है. So आज के time में एक ऐसी hobby या एक ऐसा passion जो आप you have been doing it, and maybe that is also inspiring a lot of other individuals in changing their mindset, in changing ideology about Cleft, maybe in the outer world. So how and what you do right now? So maybe we can start with Jay, since So जो चीज मैंने एज अ क्लेफ्ट पेशेंट आउट ऑफ द बॉक्स करी है, दैट इज सिंगिंग. आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट कि मैं कभी गा पाऊंगा, बट स्कूल में एक बार ऐसे हुआ, मेरे को पहले से शौक था सिंगिंग का, बट मैं पहले ग्रुप्स में गाया करता था, क्वायर में गाया करता था. तो आफ्टर दैट एक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कैन सिंग सोलो. तो आई अप्लाइड फॉर द I went for the auditions, but what happened when I reached the audition, they told me that, Jay, you can't do it. मैंने why? I mean, I used to sing in choir and group performances. There, no one said anything. They said, Ki, I don't think so, you can do it. I mean, they did not give me a proper reason, but of course I knew it. Ki, they were also right कि उस time पे I wasn't trained or I had any experience. Also, Cleft was the main reason I knew it. So ये basically मेरी जिद बन गई कि अब तो गाना ही है. Okay. So many people told me कि नहीं हो पाएगा जय, but I never listened. मैंने practice करी, and naturally singing lessons लेने से बहुत घबराता था कि like बाकी बच्चे भी होंगे वहाँ पे, they will listen to me and they might laugh at me, because initially it will not happen कि I will become a proper singer. Nasality was there, so resonance, sound resonance, everything was there. So I went on YouTube. YouTube, I did some research, watched a lot of tutorials, and मैंने singing start करी. Even Dr. Karun told me कि तुम हिंदी क्लासिकल से थोड़ा start करो, do some pranayama, yoga and all. उससे voice थोड़ी खुलेगी. Okay, so I did everything. My speech therapist also told me कि give it a shot. Singing, so many people do it. They train themselves. Okay, so I went for it, and gradually I'm going there. Okay, I'm not a proper singer right now, but I can promise if you sit in front of me and I sit with my keyboard, and when I sing, you will be mesmerized. You will be mesmerized. So that level of confidence took me like 2 years. I was working on my confidence. मैं इतनी बड़ी ऑडियंस से बोल भी नहीं पाता था. Now I can. बहुत सारे लोगों से मैं मिला. This huge change basically came when we went to Lucknow for SIPA chapter when we had in Lucknow. So there I met Ashim Bhaiya and Sonali Didi for the first time. So I realized कि ये बिल्कुल नॉर्मल है. मतलब मैंने पापा से पूछा, पापा ये पक्का क्लेफ्ट पेशेंट है या नहीं? वी टोल्ड मी हाँ ये दोनों क्लेफ्ट पेशेंट है. मैंने रियली मतलब लगता तो नहीं है बिल्कुल भी. देन मैंने आशिम भैया से बात करी, सोनाली दीदी से बात करी. दे बोथ सैट मी डाउन एंड गिव मी अ पेप टॉक एंड टोल्ड मी कि उनकी लाइफ जर्नी और मेरी लाइफ जर्नी इज टोटली सेम. इट्स जस्ट कि हम क्या करते हैं उसे ओवरकम करने के लिए. दे टोल्ड मी लॉट ऑफ थिंग्स. आशिम भैया टोल्ड मी कि वो भी किसी से बात नहीं करते थे, एंड
मेरा भी सेम था, आई नेवर यूज्ड टू टॉक एंड ही टोल्ड मी कि जब तक बोलोगे नहीं सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में है, क्या तुम बताना चाहते हो उन्हें। तो उसके बाद से मुझे समझ आया कि या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट मुझे करनी पड़ेगी, बिकॉज इट हैपेंस कि काफ़ी लोग मेरे पास नहीं आते बात करने के लिए बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक मी अनकंफर्टेबल और देमसेल्व्स आल्सो, दैट यूज्ड टू हैपन अ लॉट। सो मैंने ये कोशिश करी कि मैं खुद जाके लोगों से बात करूँगा। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ऐसे मजाक भी उड़ाया गया मेरा, एंड एक प्रॉपर ग्रुप था जिससे मैं दूर रहता था, मतलब हमेशा डिस्टेंस बना के रखता था कि आई विल नॉट गो नियर दैट ग्रुप एट ऑल, बिकॉज वो देखते ही मुझे मेरा मजाक उड़ाते थे। तो व्हाट आई डिड कि आई सराउंडेड माई सेल्फ विद पीपल जो मुझे सपोर्ट करते हैं एंड हु थिंक दैट आई कैन अचीव एवरीथिंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। That's so nice, to hear all that. So, the way your friends, has helped. In fact, the groups, the connections, helped, overcome a lot of, barriers. So, Tanya, we just quickly come to you, and, we would want to also understand that, what has been that hobby, or since you have been a social blogger, and, there were so many brands. How did this start? Anything, which you would want, maybe share with us? So as Jay shared that his hobby was singing, I was always passionate about writing, and I loved writing about fashion and beauty. But I never had the courage or confidence to post my own pictures until I had my last surgery. Dr. S.V. Kharbanda did this. वहीं बैठे हैं वो उन्होंने की थी मेरी सर्जरी, और उसके बाद that has been like a game changer for me. Because उससे पहले मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं था that I can post my own pictures and that too on a social platform. But उसके बाद से I started posting pictures, फिर लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया, मेरे followers gain हो गए, and I never ever thought that बचपन में जो बच्ची क्लेफ्ट थी जिसको मतलब I was always passionate about makeup, बचपन में मुझे समझ नहीं आता था लिपस्टिक कैसे लगानी है, and now makeup brands reach out to me कि आप हमारी लिपस्टिक पकड़ के एक फोटो खींच दो बस। So this is how it all started. And as Jay said about bullying, I was also get bullied in school, but what I focused on कि आप अपने आप को किसी चीज़ में अपस्किल कर लो। जैसे आशु ने भी शेयर किया था कि फिर लोग पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछते कि अच्छा ये क्या हुआ है, वो ये पूछते हैं आपने IIT क्रैक कर लिया। तो आज लोग मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं अरे आप फैशन ब्लॉगर हो, बीइंग अ क्लेफ्ट चाइल्ड। तो दैट इज हाउ इट चेंज्ड। मेरे को स्कूल में बुली करते थे, मैं पीट के आ जाती थी लोगों को, मैं नहीं डरती थी। चाहे घर पे आके रो लो, मैं वहाँ पीट के आ जाती थी। But yeah, it all started since school, and then I made my website, I started posting pictures, and now I've collaborated with more than 100 fashion and beauty brands, and I'm representing them. And so many other like inspirational pages, websites came for me for interview. Even I've been made an ambassador for a fashion brand. So yeah, it all started with a push. आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देना खुद ही होगा। आपको यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे कुछ, क्योंकि दूसरे तो क्वेश्चन करते ही हैं, बट मैंने अपने आप को बोल बोल के कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं हीरोइन हूँ, मैंने सबको बिलीव करवा दिया कि आई एम हीरोइन। So yeah, this is how it all began, and it's still continuing. And now I'm working with Google as well, and I even got hired for my first job. उन्होंने मेरा Instagram देख के मुझे job दी थी that you are a fashion blogger, so you will be handling our social media from now. So yeah, even फिर इतनी सारी पोस्ट इंटरव्यूज को देख के बहुत सारे क्लेफ्ट लोग मुझसे जुड़े भी हैं। आई हैव बीन इन टच विद कम्युनिटीज, एंड बच्चे आके मुझसे पूछते हैं कि आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे पोस्ट कर लेते हो, कैसे सबसे मिल लेते हो, हाउ यू आर सो एक्सट्रोवर्ट। तो आई विल ओनली से दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आप सोशल मीडिया पे स्टार्ट करो, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, इन जनरल इज वेल। आप कॉन्फिडेंटली रहोगे, आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो एवरीवन will ignore every other flaw,
and they'll start believing in you as well. So yeah. That's really amazing, Tanya. In fact, digital age में आज के time में social media has been, impacting a lot of youth individuals, with good habits, and and you have shown, how it can actually make a greater impact, in the outer world. One last thought, Harkirat ji, that for our youth, you would want to share that one thought because you have been, आपकी family, आपके friends, जिस तरह से आपका support किया, you have individuals all across. So one thought that you would want to share with all the youth. In fact, not just youth, I would say children or the adults. Actually, I want to say only one thing. It also applicable on to my lane partners, my daughters, not parents, as well as everyone here and everyone out there in the world. The simple formula, as I am in the business, so I will talk about the business. The simple formula, no at the moment, movement interested in you. You have no at interest in them. Anak nyatne nyatat nyatneo no omil opyan ane no omil hematne ane no you have no start it. No matter if hindi me muhawanai on as I'm no no religion his religion wahap me he anak anam emanat neo no dunia he hayana namak me mathat niya no mo ye suruat apo ani bale so mano ome internet in ho no up and out me internet in ho and that simple formula no in fine thank you. That's an amazing thought. आपको लोगों को interest दिखाने के लिए आपको खुद उनमें interested होना पड़ेगा. So I think while we would like to conclude this session, I'm sure all of us understand that how close social ties with doctors, with our parents, family, friends, how satisfying it is, while you while you interact with them, while they support you, while they provide you with different sort of understanding with you, right? So on this note, I would like to thank all our panelists, to be here and to join us here. Thank you for giving your time and being here. Thank you.